very, very good evening to all of you. I would like to welcome you all in my evening session. Uh, so, we are starting this session, which is going to be presented on every Friday. In this session, we are going to focus a lot on real estate. Either it is residential, commercial, pre-construction, real estate in Canada, especially specifically in Ontario, Alberta, Vancouver, or real estate in India, real estate in Dubai. My endeavor is going to be I will be bringing you a lot of guests, a lot of knowledgeable people who are going to share with you their insight, their knowledge, their understanding about the real estate industry and in the areas which they specialized in. So, I will request all my viewers to make sure mark their presence by putting some comments over there. If you have any question related to the real estate industry, I'll be very happy to answer. If you want to become part of the real estate industry, want to join SaveMax, I'll be happy to answer any of your questions or anything related to real estate under the sun. Whatever is in our knowledge, in our understanding, I will be very happy to answer all your questions. How we can make this session interactive? Having more open communication, having two-way communication. Please don't hesitate to put your comments, your questions, so that we can make this session more lively, more interesting, and more fruitful for all of you. So, thank you very much for joining. Some of the viewers, I can see you are already there watching this show on various channels, either it's Facebook or it is uh, YouTube or LinkedIn or Instagram. Please accept my sincere appreciation for your time, for your efforts. And as I mentioned, let's make this show more communicative. Let's make it more productive and more knowledgeable for all of us. So today I am going to talk about a little bit about commercial real estate, uh, which is one of the most complex topic of the real estate industry. But it is complex until we don't know about it or until we don't have a qualified or I would say the right person to guide you. We are going to share a lot of insight about commercial real estate, and today I'm going to present. Uh, I call him a celebrity realtor actually, and I will give you the reason for that. Especially like a lot of our viewers they come from different part of worlds. Either it is India or it is US, uh, Australia, Dubai, a lot of places. And many of you might have seen him on Bollywood, on televisions. Uh, Let me give a warm welcome to none other than my wonderful and lovely friend, Mr. Jay Kalra. Hi everyone. Thank you, Ramanji. Good evening. Thank you. Sorry, Jay. How I've are you? just finished a showing and I'm in my car. I couldn't reach office in time, so I will be joining from the car today. That's fantastic, Jay. As long as the message is clear and communication is clear, I'm pretty happy with that. Absolutely. So, Jay, how was your day so far? Din bacha hai, Ramanji. Day is well. The weather is good, but yeah, a good sign for a good realtor is that you're busy and showings हो रही हैं, clients meeting हो रही हैं. So yeah, it's a productive day so far. Fantastic. So, Jay, आज we are going to talk a little bit about the commercial real estate, Yeah. which I know is a very complex topic for so many of so many clients and so many people who are not so well versed with the real estate industry. Uh, but everything I always tell people, rocket science is rocket science until you don't know about it. Same is the case with the commercial real estate. It is complicated until and unless you don't have a right person to guide you, to support you, to help you. So that's important, Yeah. right? So you are working very actively in commercial real estate. Either it's the land purchase, or it is the warehouses, or it is the businesses. How is your experience in the commercial world so far?
Well, it is very interesting because unlike residential real estate, where in commercial real estate there are very different asset classes. जैसे Right. कि lands हो गई, आपके gas stations हो गए, you have retail plazas, you have multi-unit family apartment buildings, you have many different things, and every case is very unique. Right. Because there are different situations, different business requirements, different client needs. So to have an overall understanding, what is it that your buyer or seller, whosoever you're representing, what is their need, what is the current situation in terms of, say, for example, in land, what is the current zoning, what will be the future zoning, what is the city draft plan or secondary draft plan. So just having that overall understanding is very important. राइट सो जे आज हम एक काम करते हैं, आज हम ना किसी एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, Right. right? So that we can have some critical discussion and some analytical, I would say, communication on it. And let's see how the viewers come up with their questions. And I think land and land development is a very very interesting subject which I would love to speak about today. और हम में से बहुत सारे लोगों को होता है यार लैंड खरीदनी है कहीं पे, और जो है इसको डेवलप कर देना। और मैंने बहुत देखा है कनाडा में, और बहुत बार ऐसा होता भी है कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि यार इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, लैंड को डेवलप कैसे करना है, इसके अंदर किस तरह की कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, या क्या क्या चीज देखनी चाहिए जब हमें बाय करनी है. सो ऑल दोस पॉइंट्स आर वेरी very interesting, and of course until unless you don't have knowledge about it, it's very complicated. Yeah. So what's your take on to that? So let's say if I like a land and I want to buy it. Yeah. So what are the three major things which I need to look into that? Well, रमन जी, अगर कोई मेरे से ऐसे क्वेश्चन सपोज करें, आप एज अ बायर आते हैं, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस और इंटेंट बिहाइंड बाइंग दैट लैंड. अब कई लोग दे जस्ट वांट टू बाय लैंड बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू द फ्यूचर ऑफ दैट लैंड, दैट टुमारो इफ दैट land comes in any official plans, or if that land can be developed, they don't want to immediately develop it. They look at it as an investment. Then there is a different approach. But there are a lot of time when you work with land developers who want to develop it, say, for and doing any construction on it, then it is a different approach. So I always say first we have to identify what is. Jay, I think we are losing the connection with you. Jay, can you hear me? Yeah, I can hear you, but I guess I can't. Can you hear me? I can hear you, but I can't see you. Oh, okay. I don't know. Maybe it is some connection dip, and maybe I hope it comes back. So that is very important. What is the intent of buying that land? But Right. say if you want to develop it, then of course we have to check what is it currently zoned for. And the best thing I tell when I try to talk to people who are developers or builders होते हैं, it is to always look at that parcel of land, talk to a city planner to see what is the city's outlook on that piece of land, how will city support it, what kind of development is city looking for. So and accordingly make a thing, because I think in commercial real estate, as we have all learned, studying to be a real estate agent, that you have to always advise your client to go to the correct professional to take the right professional advice. So in land development, there are a lot of people who are involved. One of the most prominent one is city planners, who actually interact with city to understand how to develop a land. So trying to identify the need and then accordingly advising the client for their best interest is what we have to do. Right. So, Jay, let me put my 2 cents onto it. And I think you have shared some very good points onto it. मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज के, कि जब भी आपको कोई लैंड खरीदनी है तो आपको 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना है. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उस लैंड की जोनिंग क्या है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आज उसकी जोनिंग क्या है. दूसरा आपने ये देखना है कि वो सेकेंडरी प्लान में कहाँ पे आ सकती है, कि कल को सेकेंडरी प्लान में अगर वो उसका पार्ट है तो उसकी किस तरह की फ्यूचर डेवलपमेंट हो सकती है. दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि उस लैंड का जो एनवायरमेंटल है, उस लैंड का एनवायरमेंटल स्टेटस क्या है, कि उसके अंदर कोई इस तरह की चीज तो नहीं है
कि जहां पे कोई स्पिल ओवर हुआ है या जहां पे कोई एनवायरमेंटल इश्यू हो सकता है, बिकॉज समटाइम इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, राइट? तो और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस लैंड के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी फ्यूचर वैल्यू बहुत डिटरमिन करती है। सो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वो ये है कि पहले तो आपने देखना है इसकी जोनिंग क्या है, दूसरा आपने देखना है कि वो आपकी जो है उसके ऊपर कोई एनवायरमेंटल इश्यू तो नहीं है, और तीसरा उसके सराउंडिंग में जो है क्या क्या चीजें हो रही हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद बहुत सारे फैक्टर हैं कि आप इसको किस प्राइस पे बाय कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि आज अगर मैं जिस प्राइस पे बाय कर रहा हूं, तो मेरी उसके ऊपर जो है फाइनेंसिंग की, मेरी उसके ऊपर उस लैंड को रिटेन करने की कॉस्ट क्या होने वाली है। बहुत बार हम एग्जैक्टली। मैंने मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग वो लैंड खरीद तो लेते हैं, और हाँ जी। एक टाइम के बाद वो उनके ऊपर इतना बोझ बन जाती है कि या उसकी कॉस्टिंग इतनी हो चुकी होती है कि वो, अगर उसको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ कैलकुलेट करूं या उसके साथ मैचअप करने की कोशिश करूं, तो वो कई बार मैचअप ही नहीं होती, उसकी सेंस ही नहीं बनती है। एग्जैक्टली। और इसीलिए मैं आई थिंक वो सबसे पहले पॉइंट पे वापस जाना चाहूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब कोई लैंड बाय कर रहा है तो उनका फाइनल मोटिव क्या है, राइट। उनका फाइनल पर्पस क्या है। अगर मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ड्राफ्ट प्लान अप्रूवल में आएगा या नहीं आएगा, सेकेंडरी ड्राफ्ट में आएगा, तो क्या उस क्लाइंट की फाइनेंशियल होल्डिंग पावर है कि वो लैंड उस टाइम तक hold कर सकें, or is it, are they looking for something which they can quickly turn around and do some construction on it and sell it? So वो objective identify करना बहुत जरूरी है। And then of course as you always said, I absolutely, आपने बहुत अच्छे से summarize किया कि zoning क्या है, उसमें क्या क्या permitted uses हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो financially liable हैं या नहीं हैं। So ये having that understanding is very important. राइट। सो गाइस, मुझे आज कोई क्वेश्चन या कमेंट नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जे, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप एक बार लॉग आउट करके फिर दोबारा लॉग इन कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू Absolutely, सी योर पिक्चर। सो आई थिंक दैट विल absolutely. हेल्प I will अस do टू that. कम्युनिकेट बेटर। सो Absolutely. जब आपने ये सारी चीजें देख ली, लेट्स से आपने कोई लैंड जो है वो आइडेंटिफाई कर ली जिसको आप बाय करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि इसकी जो है आपके लिए बहुत सारी फ्यूचर वैल्यू हो सकती है, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि आप जब भी लैंड की कोई भी ऑफर डालते हैं, वहां पे आपको बहुत ध्यान से काम करना है, बहुत सोच समझ के काम करना है, क्योंकि ये आपका जो है फ्यूचर का एक बहुत बड़ा एसेट है, और ये बहुत बड़ा एसेट जो है आपकी बहुत बड़ी लायबिलिटी भी बन सकता है अगर आपने इसके अंदर कोई भी टेक्निकल मिस्टेक कर दी। सो आपको, जैसे कि मैंने कहा कि आपको इस पे बहुत सोच समझ के काम करना है। सो जब भी आपको लैंड की ऑफर डालनी है, तो यू हैव टू मेक श्योर फ्यू थिंग्स आर बीइंग वेल टेकन केयर। सबसे पहले तो आपको एक अच्छे रियल्टर के साथ इसके लिए कनेक्ट करना चाहिए, जिसको कि उस फील्ड की, उस बारे में बहुत सारी अच्छी नॉलेज भी हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हो। और बहुत बार मैंने देखा है कि खास तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। हमारा कैलेडन में बहुत सारा जो है लैंड बिकता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को लैंड बाय करते देखा है इस सोच के साथ कि यार अच्छा, कल तो इसको प्लाट काट देंगे, बट बिना इस बात की अंडरस्टैंडिंग किए कि उसकी जो जोनिंग है, बहुत सारी लैंड इधर ग्रीन बेल्ट में होती है, नियाग्रा एस्कर्पमेंट में होती है, सीवीसी के अंडर होती है, तो उस लैंड को डेवलप करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत सोचने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, ये आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि ये 50 एकड़ का, 100 एकड़ का लैंड का पीस है, पर वो यूजेबल उसमें से कितना है, ये देखना बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट कितने आपके उसके उसके ऊपर हो सकती है, क्योंकि जिस लैंड की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, आप उसका सेम प्राइस नहीं दे सकते जो प्राइस आप डेवलपेबल लैंड का दे रहे हैं। और अगर आपको या आपके रियल्टर को उस बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप उसके ऊपर मार खा सकते हैं। सो इस बारे में जो है थोड़ा-सा आपको सोच समझ के काम करना चाहिए। जय, व्हाट्स योर टेक ऑन टू दिस व्हाट आई मेंशन्ड? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमन जी। आई होप यू कैन सी मी नाउ। यस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वंस वी आइडेंटिफाई अ लैंड, उस पे जिसको हम एक ऑफर टर्म में कहते हैं, ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि राइट। जैसे कि आपने पहले कहा कि एनवायरमेंटल
रिपोर्ट्स उस पे लेना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि वहाँ पे कोई किसी तरह का एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं है, because that can be a very expensive cost. राइट. But having said that, ड्यू डिलिजेंस करना, जैसे कि आपने सारे पॉइंट्स जो कहे कि वहाँ पे जोनिंग क्या है, वहाँ पे क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, क्या नहीं डेवलप कर सकते, और ये इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, अगेन एज I said, सिटी प्लानर से मिलना, सिटी से बात करना, ट्राइंग टू गेट दैट इंफॉर्मेशन, और वो सब इंफॉर्मेशन अगर आपके फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा कि इंटेंडेड यूज से मेल खाता है, तभी हमें वो परचेज करनी चाहिए. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम, जैसे आपने कहा, नाइग्रा एस्कार्पमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं, ग्रीन बेल्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, यू हैव टू टेक अ डिसीजन विच इज in sync with your investment strategy. राइट जी. सो आई थिंक ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए इन बातों को अंडरस्टैंड करना. हाँ और जी. जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि लैंड को बाय करने का डिसीजन कोई छोटा डिसीजन नहीं होता. जे हाँ. कुछ कोई ऐसी कुछ पीसेस ऑफ लैंड्स हैं आपके पास जो आप मेंशन कर सकते हो, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको उनसे कुछ बेनिफिट हो सकता हो, या जिस पे आप अच्छी डील बना के दे सकते हैं? डू यू हैव एनीथिंग विद यू? Yes, we have some listings which we have done at SaveMax. हमारे पास एक बीम्सविल में लैंड है, जो कि एक अंडर डेवलपमेंट है. वी ऑल्सो हैव स्मॉल लैंड पार्सल इन ओकविल, जहाँ पे एक ऑफिस बिल्डिंग अराउंड 8 to 10,000 स्क्वायर फीट की डेवलप की जा सकती है. प्लस अगेन एज I said कि I'll be very open to answer any questions अगर कोई viewers देखना चाह रहे हैं या उनकी कोई specific requirements है. We at SaveMax will be happy to meet them, talk to them, understand their views and requirements, and accordingly find them the right piece of land. दैट्स सो फैंटास्टिक. सो जे मेरा आज का पर्पस था कि थोड़ा सा हम इस बारे में आज बातचीत कर ले, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर दे. हाँ जी. और आपका जो एक बड़ा फेमिलियर सा फेस है वो भी उसकी जो है एक आपको भी सब लोगों के रूबरू कर दें. हाँ. सो हम ये जो हमारा सेशन है ये हम एवरी फ्राइडे को 5:30 बजे 5:30 every Friday we will be coming up with more ideas, more discussions, more knowledge about the real estate industry, as we spoke a little bit about the land development today, buying the land, and some of the parcels of land. You spoke about that Beamsville land. हाँ जी. uh, I think that's a great option. Like उसके ऊपर almost like 5 लाख स्क्वायर फीट का जो है कंस्ट्रक्शन हो सकता है. बड़ी Absolutely. स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर है वो लैंड. हाँ जी. 10 एकड़ का पार्सल है और मैंने खुद उसको देखा है, और बहुत ही मतलब मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा पीस ऑफ लैंड है जो कि जी. फ्यूचर के लिए किसी के लिए भी बड़ा एसेट हो सकता है. और जी. आने वाले टाइम में जो बीम्सविल है, खास तौर पे जो ये नियाग्रा का एरिया है, ये बहुत बहुत बड़े लेवल पे जो है इसकी डेवलपमेंट हो रही है. तो जी. मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए. और हाँ अगर जी. कोई रियल्टर फ्रेंड्स है और उनके पास अगर कोई इस तरह का क्लाइंट भी है, तो वो भी हमें उस चीज के ऊपर जो है वो अप्रोच कर सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक? Absolutely. And as I said, the land is a very important topic, especially हम India से आते हैं, तो we as a culture, we as a society like in owning a lot of land. So it is something which is very close to us. But yes, we are definitely as SaveMax under Ramanji's guidance, we are not only exploring a lot of land deals, but बाकी हमारी लिस्टिंग्स जैसे हम काफ़ी अभी काम कर रहे हैं गैस स्टेशंस में, वेयर हाउसेज में, रिटेल प्लाजाज में. सो ऐसी हर एसेट क्लास की अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं. सो अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ फील फ्री टू रीच अस. डेफिनेटली. और जे, एक बार आप बिफोर आई रैप अप द सेशन प्लीज शेयर योर नंबर एज वेल, so that if anybody is interested they can get in touch with you as. Absolutely. You can reach me at 647-869-7973. Sorry, Jay, number one more time. 647 Mhm. 869 7973. 7973. And you promise that you're gonna get a good deal? Absolutely, we'll try our best. As will be validated by some of the current customers we have helped. We try our best to get the best deals for our customers. Okay, that's fantastic, Jay. So, Jay, thank you very much for joining. We're gonna catch up next Friday sharp at 5:30 with some more Absolutely. content, with some more knowledge, with some more information about the real estate industry. And Stay I connected, guys. Sorry, go and ahead. I promise I'll be in office at that time. Done.
All right, all right. So Bye, everyone. Dinesh, Sam is asking, sir, what about Saturday session? Dinesh, I know we pretty much like discontinued Saturday session, but I'm going to start my Saturday session, which we normally do sharp at 12 o'clock, and we are going to discuss a lot about real estate industry and life in general. जी, I think कुछ technical issue चल रहा था और मुझे लग रहा है कि कुछ channels के ऊपर वो stream नहीं हो पा रहा था, and I can see like now a lot of people joining there. So, guys, my sincere apologies. I think because of some technical issues, this live stream was not happening on Rise with Raman social on Facebook page. So, let's get connected next week, and we'll be coming up with some more interesting discussion. Thank you very much for joining today. I love you all. Stay happy, stay healthy, stay connected, and above all, keep spreading the positivity. Thank you very much, and have a fantastic, fantastic day ahead. Bye.